तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ये मुलाकात काफी अहम हो जाती है। अब से कुछ देर पहले तेल अवीव पहुंचे हैं जो बाइडेन और जो युद्ध चल रहा है इसमें वॉर स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने देखा जो बाइडेन के लिए बड़ा झटका भी था क्योंकि जो जॉर्डन में मुलाकात होने वाली थी वो अब नहीं होगी, रद्द हो गई है। और ये मुलाकात जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, अमेरिका जो लगातार इजराइल की मदद कर रहा है, हमास की निंदा कर रहा है, और ऐसे में इस मुलाकात से क्या संदेश जाएगा ये देखना होगा। और आपको बता दें कि ये लाइव तस्वीर इजराइल के तेल अवीव से सामने आ रही है जहां पर आप जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू को देख रहे हैं। दोनों के बीच मुलाकात चल रही है। Secret hiding places where parents hid their children, and just imagine, Mr. President, the fear and the panic of those little children in their last moments as the monsters found out their hiding places. Hamas kidnapped women, children, elderly, Holocaust survivors. I know you share our outrage on this, and I know you share our determination to bring these people back. On October 7th, Hamas murdered 1,400 Israelis, maybe more. This is in a country of fewer than 10 million people. This would be equivalent to over 50,000 Americans murdered in a single day. That's 29 11s. That is why October 7th is another day that will live in infamy. Mr. President, you rightly said that Hamas is worse than ISIS. The German chancellor who visited here yesterday said that Hamas were the new Nazis. You're both right. And just as the civilized world united to defeat the Nazis and united to defeat ISIS, the civilized world must unite to defeat Hamas. I can assure you, Mr. President, Israel is united to defeat Hamas. And we will defeat Hamas and remove this terrible threat from our lives. The forces of civilization will prevail for our sake, for your sake, for peace and security in our region and in the world. Mr. President, for the people of Israel, there's only one thing better than having a true friend like you standing with Israel, and that is having you standing in Israel. Your visit here is the first visit of an American president in Israel at a time of war. It is deeply, deeply moving. It speaks to the depth of your personal commitment to Israel. It speaks to the depth of your personal commitment to the future of the Jewish people and the one and only Jewish state. So I know I speak for all the people of Israel when I say, thank you, Mr. President. Thank you for standing with Israel today, tomorrow, and always. Mr. Prime Minister, thank you very much. Look, folks, I wanted to be here today for a simple reason. I wanted the people of Israel, the people of the world, to know where the United States stands. I've had my great Secretary of State here. He's been here for a lot. But I wanted to personally come and make that clear. Terrorist group Hamas has slaughtered, as has been pointed out, over 1,300 people. And it's not hyperbole to suggest slaughtered. Slaughtered. And including 31 Americans as part of that. And they've taken scores of people hostage, including children. You said, imagine what those children hiding from Hamas were thinking. It's beyond my comprehension to be able to imagine what they're thinking. Beyond my comprehension. They're committed evils that and atrocities that make ISIS look somewhat more rational. You know, Americans are grieving with you. They really are. And Americans are worried. Americans are worried because we know this is not an easy field to navigate, what you have to do. But the fact is that Israel, as they respond to these attacks, it seems to me that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. And we're going to make sure that occurs, as you know. And we have to also bear in mind
that Hamas does not represent all the Palestinian people, and it has brought them only suffering. You know, years ago I asked the Secretary of State when he and I were working in the Senate to write something for me, and he said, he wrote a line that I think is appropriate. He said, it's not, we lead, not just, well, I won't go into it, I'll wait later, taking too much time, but the point is this, that I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure. So we got to overcome a lot of things. And it also means encouraging life-saving capacity to help the Palestinians who are innocent, caught in the middle of this. And well, at any rate, that's who we are. Not just me, but I mean, that's who the United States is. And it's just not the example of our power, it's the power of our example that's almost as important. The world's looking. Israel has a value set like the United States does and other democracies. And they're looking to see what we're going to do. So, Mr. Prime Minister, I'm very happy to be back in Israel with you. Thank you for having me, and I'm looking forward to having a thorough discussion about where everybody goes from here. But thank you, and I want to say to the people of Israel, their courage, their commitment, their bravery is stunning. It's really stunning. I'm proud to be here. Thank you. Mr. President. ये तस्वीरें आप इजराइल के तेल अवीव से देख रहे हैं, जहां पर इससे पहले नेतन्याहू की तरफ से ये जानकारी बाइडेन को दी गई किस तरीके से 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया। 1400 नागरिकों की वहां पर हत्या कर दी गई। इसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी शामिल थे। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने न सिर्फ समर्थन किया है, बल्कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन यहाँ पहुंचे हैं तो उस पर आभार जताते नजर आए नेतन्याहू। इसके बाद आपको बता दें कि जो बाइडेन की तरफ से ये कहा गया कि हमास फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और हमास की तरफ से जो किया गया है उसकी निंदा होनी चाहिए, और मैं निजी तौर पर यहाँ आना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आया और अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, यही संदेश देने में आया। तो ये सबसे अहम तस्वीर है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्राध्यक्ष जो बाइडेन इस वक्त मौजूद है, नेतन्याहू से बातचीत कर रहे हैं और ये कहा जो बाइडेन ने कि वो इस वक्त इजराइल के साथ खड़े हैं। साथ ही हमास को कड़ा संदेश भी दिया है क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है, और ये कहा कि हमास फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। नेतन्याहू ने कहा कि जो 7 अक्टूबर का दिन है ये काला अध्याय है और इसमें 1400 इजरायलियों की मौत हुई है, यानी कि जिस देश की जनसंख्या 10 मिलियन से कम है उसमें एक साथ इतने लोगों का नरसंहार हमास द्वारा किया गया। हमास ने ही इजरायलियों का कत्ल किया, लोगों को बंधक बनाया गया है जिसमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, और उनको इजरायल की तरफ ढाल की तरह हमास इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में उन बंधकों को छुड़ाना होगा हमास के कब्जे से, ये यहाँ पर संकल्प नेतन्याहू ने लिया है। जो बाइडेन ने कहा कि मैं इसीलिए तेल अवीव पहुंचा हूं क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि अमेरिका इस वक्त इजरायल के साथ खड़ा है, क्योंकि जो इस वक्त तनाव चल रहा है, युद्ध चल रहा है, इसमें अमेरिकी नागरिकों की जान भी गई है। और ये तस्वीर सबसे अहम हो जाती है क्योंकि जो बाइडेन, जिनकी सुरक्षा काफी कड़ी होती है और दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षा के घेरे में जो बाइडेन रहते हैं, उसके बावजूद वो यहाँ पर पहुंचे हैं जब संकट का समय है, मुश्किलें हैं, लेकिन इस बीच वो तेल अवीव पहुंचे हैं और एक संदेश देना चाहते हैं। संदेश हमास को भी है, संदेश अरब देशों को भी है। जो भी देश इस वक्त हमास का समर्थन कर रहे हैं उनके लिए ये संदेश है। और ये भी कहा नेतन्याहू ने, जो बाइडेन से मुलाकात में ये साफ कर दिया कि वो हमास को खत्म करेंगे, क्योंकि जो जख्म हमास ने इजरायल को दिए हैं, ऐसे जख्मों की कल्पना कभी इजरायल ने की ही नहीं थी।
इजराइल भले ही छोटा देश है, लेकिन उसकी सैन्य क्षमता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। और ऐसे में ये तस्वीरें इसलिए भी खास है क्योंकि अमेरिका पहले दिन से ही इजराइल का समर्थन कर रहा है, चाहे वो राहत सामग्री पहुंचाना हो, चाहे वो आर्टिलरीज की मदद पहुंचाना हो। अमेरिका ने वो जो कहा है वो किया है। और ऐसे में जो बाइडेन का यहाँ पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 12 दिन इस युद्ध को बीत चुके हैं। युद्ध भीषण मोड़ पर अभी भी है। हमारे सहयोगी नीरज का सीधे रुख कर लेते हैं। नीरज, तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, मुलाकात हुई है। नेतन्याहू ने उस 7 अक्टूबर का जिक्र किया जिस दिन नरसंहार मचाया गया था। बाइडेन ने भी ये कहा कि निजी तौर पर मैं यहाँ आना चाहता था, इसलिए यहाँ आया, और यहाँ से एक सख्त संदेश जो है वो इस मंच के जरिए दिया जा रहा है। नीरज, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है। नीरज, ये एक सख्त संदेश है न सिर्फ हमास के लिए बल्कि उन सभी देशों के लिए जो इस वक्त हमास के समर्थन में खड़े हैं। बिल्कुल, अमेरिकी राष्ट्रपति का महज 12 दिनों के अंदर यहां पहुंच जाना यह बिल्कुल संकेत है इजराइल के पक्ष में, और तमाम खाड़ी देशों के को भी संकेत है, हिजबुल्लाह को संकेत है और हमास को भी संकेत है कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। लेकिन कुछ उम्मीदें भी अमेरिका की हैं। अमेरिका चाहता है कि ये लड़ाई हमास से आगे न बढ़े इजराइल की, हिजबुल्लाह इसमें शामिल ना हो, खाड़ी के देश शामिल ना हो, मानवीय सहायता पहुंचने में फ़लस्तीन के लोगों तक कोई दिक्कत ना हो। जो फ़लस्तीनियन जाना चाहते हैं बाहर इजिप्ट के रास्ते से, उन्हें हमास कोई दिक्कत न करे। तो ये उम्मीदें हैं क्योंकि अमेरिका नहीं चाहेगा कि इजराइल एक ऐसे युद्ध में फंस जाए जहां वो कमज़ोर हो जाए और खाड़ी के देश शामिल हो। लेकिन इजराइल की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि वो हमास पे हमला करेगा चाहे कुछ भी हो। ठीक है नीरज, लौटेंगे आपके पास। तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, जो ये मुलाकात इस वक्त जो बाइडेन और नेतन्याहू के बीच चल रही है।